Hello dear students, this is Preeti Chhabra and I welcome you all to Learning Never Stops. In the last video we had seen the catenation property of carbon whereby we saw कि किस तरह से carbon atom can make bond with other carbon atoms. Today in this video we will be studying about the structures of some simple carbon compounds. Let us start with a very simple structure of C2H6. You will write it like this. सबसे पहले कार्बन के दो एटम्स हैं तो कार्बन विल मेक बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम. कार्बन की वैलेंसी कितनी है? इट्स 4. दैट मीन्स इट कैन मेक 4 बॉन्ड्स. एक बॉन्ड इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ बना लिया. दोनों कार्बन की 3 और अभी 3 और बॉन्ड्स इन्हें बनाने बाकी हैं. एंड देयर आर 6 हाइड्रोजन एटम्स. दिस वन बॉन्ड विथ हाइड्रोजन, इट विल मेक वन मोर बॉन्ड विथ हाइड्रोजन, then one more bond with hydrogen. This carbon has completed its valency. This carbon also will make bonds with 3 other hydrogen atoms. Now let us write structure of one more compound जहाँ पे carbon atoms 2 ही होंगे लेकिन hydrogen atoms 4 होंगे. यहाँ पे hydrogen atom 6 है, यहाँ पे 4. How is it possible? सबसे पहले carbon and carbon का let us make a bond. Carbon carbon, but there are 4 hydrogen atoms. Okay, this carbon will have 2 hydrogen atoms and this carbon will also have 2 hydrogen atoms. ठीक है, C2H4 के अकॉर्डिंग ये हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया. There are 2 carbon atoms and 4 hydrogen atoms. But we know कि कार्बन की वैलेंसी है 4. इसे एक और बॉन्ड बनाना है to become stable. How is it possible? Like this. If there is a double bond between these 2 carbon atoms, then इस कार्बन आटम ने भी 4 वैलेंसी कंप्लीट कर ली एंड इस कार्बन आटम ने भी कंप्लीट कर ली एंड स्ट्रक्चर है C2H4 एंड ये हो गया C2H4. फाइन. इफ आई आस्क यू टू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ अगेन C2, 2 ही कार्बन आटम्स होंगे बट दिस टाइम हाइड्रोजन आटम्स सिर्फ 2 होंगे. देन हाउ कैन यू राइट इट? फर्स्ट यू मेक अ बॉन्ड between the carbon atoms, then how many hydrogen atoms are there in the structure, in the compound? 2. Fine. Sorry, but again carbon की valency है 4, so it needs to make 4 bonds. इस carbon ने अभी 2 bonds बनाए हैं, इसने भी 2 more bonds. If it makes a triple bond, if there is a triple bond present between these 2 carbon atoms, then both these carbon atoms, they satisfy their valencies and hydrogen also has satisfied its valency and we have got the structure of C2H2 compound. Fine. Now let us see the names of these 3 compounds. C2H6 is ethane. It is ethane. C2H4 is ethene. Ethene. Fine. And C2H2 is ethyne. Ethyne. One thing you must have noticed, in all the 3 compounds, it is common. That means if there is a bonding between the 2 carbon atoms, if there are 2 carbon atoms जिनके बीच में bonding है तो वो naming होती है eth. ठीक है, single bond है then also it is eth, double bond है तो भी eth, triple bond है तो भी. That means कि 2 कार्बन एटम्स जिस कंपाउंड में होंगे और इनके बीच में बॉन्डिंग होगी दैट इज नेम्ड एज eth. नाउ कमिंग टू ANE, ENE एंड YNE. ANE तब होता है व्हेन देयर इज अ सिंगल बॉन्ड, alkane. ENE means if there is a double bond then you will write ENE, that is ethene, and triple bond होता है तो you name it as YNE. ठीक है, ine. So alkane, alkene, alkyne. Now let us see a structure whereby we'll have 3 carbon atoms. Okay, if there are 3 carbon atoms there will be 8 hydrogen atoms. Let's see how. First you write 3 carbon atoms with single bond each and then you fill the valencies which are left to be filled with hydrogen. Okay, so count how many hydrogens are there? 3, 3, 6 and 2, 8. Fine. So if there are 3 carbon atoms and you draw the structure, you will see that there are 8 hydrogen atoms. Now when there are 3 carbon atoms, this structure is named as propane. Again you can see ane here because there are single bonds present between carbon atoms. Okay. Now ethene is the structure with the double bond. So propene would be the structure with the double bond between any one of the 2 carbon atoms. Now if I give a double bond here,
You can see 1 2 3 4 5 but कार्बन की वैलेंसी है 4, तो it needs to make 4 bonds, तो एक हाइड्रोजन remove होगा and here also one hydrogen will be removed and now you will get C3H6, the structure when there is the compound would be C3H6 and it would be named propene when there is a double bond present between the carbon atoms. Fine. So likewise, if there is a triple bond present, so it would be propyne. Fine. Now here we have seen the structures whereby there is a single bond present between the two carbon atoms, then double bond, triple bond and so on. If there is only a single bond present between the two carbon atoms और जितने भी number of carbon atoms bonded है उसमें सिर्फ single carbon atoms के बीच में सिर्फ single bonds ही present है, such type of compounds are called saturated compounds, saturated carbon compounds, जहाँ पे सिर्फ single bond ही present होता है between the carbon atoms, चाहे जितने भी long carbon atom की chain हो. If there are double bonds present या ट्रिपल बॉन्ड, एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इफ प्रेजेंट है बिटवीन द कार्बन एटम्स, देन सच टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स. व्हाई? ये सैचुरेटेड है बिकॉज इसके पास अब और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, इसकी 4 वैलेंसी है, कार्बन की 4 वैलेंसी है एंड इसने सारे बॉन्ड्स कंप्लीट कर लिए. ठीक है, बट यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, ये ज़्यादा स्टेबल है, ये बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर है. लास्ट वीडियो में भी सॉ कि क्यों अपने कार्बन का जो साइज़ होता है एटम का वो स्मॉल होता है, जिसकी वजह से ये जो कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है ना ये स्टेबल होती है, स्ट्रॉन्ग होती है. लेकिन जब ये डबल बॉन्ड बनता है तो कंपैरेटिवली ये कम स्टेबल होता है, तो चांसेस है इसके पास एंड इवन ट्रिपल बॉन्ड थोड़ा और कम स्टेबल होगा, रिएक्टिव ये ज़्यादा होंगे. ये पॉसिबिलिटी है कि ये बॉन्ड अगर ब्रेक हो देन ये फिर से ये दैट मीन्स कि इसके पास और बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी होगी अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है, बिकॉज इससे कम स्टेबल है ये. फाइन. लाइकवाइज इसके पास भी अगर इन तीनों बॉन्ड्स में से बॉन्ड ब्रेक होता है कोई, तो पॉसिबिलिटी है कि और बॉन्ड कार्बन बनाए. That ways it is these two structures are unsaturated और ये saturated है. जितने bonds बनाने की ability थी इसने सारे bonds उसने बना लिए. Fine. So such structures, such carbon compounds जिनमें कार्बन कार्बन लिंकिंग, सारी लिंकिंग सिर्फ सिंगल बॉन्ड से होती है between carbon and carbon atom बेटा. Okay. Then such type of carbon compounds are called saturated and if carbon carbon के बीच में there is a double bond or a triple bond present, then such type of compounds are unsaturated. Fine. Now here we saw the names of the carbon compounds जहाँ पे 2 carbon atoms थे या 3 थे. 2 थे with single bond तो ethane, 3 है तो propane. अगर if there are 4 carbon atoms then it is called butane. Okay, butane. If there are 5 then pentane. And if there are 6 then it is hexane and so on it goes on. So this way these carbon compounds are named, इनके specific naming होती है. ठीक है. Now let us draw the electron dot structure of C2H6. It is C2H6. That means it is ethane. Ethane means single bond present होगा between carbon atom. That means single electron दोनों के share हो रहे हैं. ठीक है. और H6. That means it needs to make 3. Each carbon atom needs to make 3 bonds with 3 hydrogen atoms. यहाँ पे we have selected का cross as the electron for carbon, so we'll give a dot for hydrogen. Fine. And this way we'll show the sharing between carbon and hydrogen. Here also carbon and hydrogen. So this way you can make dot structures for किसी भी स्ट्रक्चर का. इफ देर इज डबल बॉन्ड, इट इज सेड दैट देयर इज अ डबल बॉन्ड प्रेजेंट C2H4, देन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स कम होंगे फॉर एवरी कार्बन एटम. there will be 2 hydrogen atoms bonded with every carbon atom, 1 2 3 4, and दोनों कार्बन के बीच में since it is C2H4 that means double bond is present, so each carbon will share 2 of its electrons. That means double bond बनेगा दोनों कार्बन एटम्स के बीच में, and this way you can show the dot structure for जिस भी structure का, जिस भी compound का dot structure it is asked. Now suppose I write the structure of C4H10. That means I am talking about butane. Fine. C4 means but,
and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rest of the valencies has been fulfilled by hydrogen. There are 10 hydrogens present, no double bond between carbon atoms, that means it is butane. Fine. Now, is this the only structure possible for butane? No, this is a straight chain structure. ये एक long straight chain है, ठीक है, 4 carbon atoms की. If I write it like this, fine, 1 2 3 hydrogen, 1 2 3 valency fulfilled है, 1 hydrogen यहाँ पे आएगा, again 1 2 3 because this carbon atom ने एक ही बॉन्ड बनाया है, इसने भी एक ही बॉन्ड बनाया है, so 1 2 and 3. So in all 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये स्ट्रक्चर हो या ये स्ट्रक्चर हो, इनका फॉर्मूला वही है, C4H10. दैट मीन्स फॉर्मूला सेम है बट इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है. ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है और ये ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर है. दिस इज अ स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट स्ट्रेट चेन, एंड दिस यहाँ पे हमने एक कार्बन के साथ 2 कार्बन की ब्रांच स्ट्रक्चर दिखाया है. सो दिस इज अ ब्रांच्ड स्ट्रक्चर. सो सच कार्बन कंपाउंड्स वेयर बाय फॉर्मूला इज द सेम C4H10 बट स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट. सो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. ओके, इनका स्ट्रक्चर जो भी ऐसे कंपाउंड है इनमें जिनका स्ट्रक्चर, जिनका फॉर्मूला सेम है, दिस इज ऑल्सो C4H10, दिस इज ऑल्सो C4H10 बट दिस and these two structures are different. तो ये दोनों हैं structural isomers. Fine. Now let us see the structure of C6H14. Let us draw it and see whether it is a saturated one or unsaturated compound. 1 2 3 4 5 and 6. Fine. 6 carbon compounds and atoms, and there are how many? 14 hydrogen atoms. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. That means it's a saturated carbon compound and it's C6H14, so it is hexane. Okay, hexane. Fine. Now let us see another possible structure for hexane. If I write it like this, if I write the structure like this, here also there are 1 2 3 4 5 6 carbon atoms present, but then if I write the structure like this, there will be only 12 hydrogen atoms present in the cyclic structure. Each carbon atom ने 2 bonds बनाए हुए हैं, 2 valencies completed है, 2 each they'll get, and so we'll have a structure whose formula would be C6. There are 6 carbon atoms, but due to the difference in the arrangement of the atoms, difference in the structure, ये formula है C6H12. Fine. There is no double bond present. Still यहाँ पे C6H14 है because it's a straight chain, but यहाँ पे formula has changed to C6H12 because it's a cyclic structure. अभी तक हमने जितने structures देखे इसमें straight chain में branched जो structure हो गया या ये cyclic structure हो गया. अभी we have seen the examples of only saturated compounds, but unsaturated compounds भी possible है in all the structures. Straight chain में we saw किस तरह से unsaturated single bond, double bond present हो सकते हैं. In the branched chain also single, double bond, triple bond possibility है, and here also suppose यहाँ पे मैं double bond cyclic में बनाऊँ. Now we'll see an example of unsaturated carbon compounds with 6 carbon atoms in a cyclic structure. 1 2 3 4 5 and 6. Okay, unsaturated कैसे होगा? Alternate double bonds present होंगे between carbon atoms. Alternate carbon atoms में double bonding present होगी. And 1 2 3, so 1 hydrogen, 1, this carbon atom is also filled 1 2 3, so it will also have 1 hydrogen atom 1 2 3. So every carbon atom will have single hydrogen atoms. So here the formula would be C6H6, and this structure is called benzene. Clear? C6H6 is benzene. ये एक cyclic unsaturated carbon compound है. यहाँ benzene में सिर्फ आपको इसका structure ही पढ़ना है, otherwise benzene एक itself it's a huge topic.
बट हियर यू जस्ट नीड टू नो कि साइक्लिक में भी अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स किसी भी स्ट्रक्चर में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हो सकते हैं, वो रिंग स्ट्रक्चर हो, ब्रांच्ड हो या साइक्लिक हो। अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड पॉसिबिलिटीज़ एवरी स्ट्रक्चर में है। ओके, नाउ अभी तक हमने जितने भी कंपाउंड्स देखे, हमने सिर्फ 2 ही एटम्स इन सारे कंपाउंड्स में देखे हैं, एंड दोज 2 एटम्स आर वन ऑफ कार्बन एंड द अदर इज हाइड्रोजन। ओके, तो ऐसे जो भी कंपाउंड्स है ना बेटा, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही प्रेजेंट हो, इट इज मेड अप ऑफ, द कंपाउंड इज मेड अप ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, तो सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन compounds. Okay, hydrocarbon. Hydro is presence of hydrogen and presence of कार्बन। सो हाइड्रोजन एंड कार्बन टुगेदर मिलके जो कंपाउंड्स बनाते हैं, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। वो एल्केन हो सकते हैं, एल्कीन, alkyne. So I end my video here. If you have any queries, please feel free to ask me in the comment section. Hope to see you all in the next video also. For that you need to subscribe to the channel. Till then, take care, stay safe and bye bye.